Good morning. Hello, everyone. How are you all? Hope that you all are fit and fine, healthy, right? So, children, today to begin our class, let me first inform you that you are having your mock test tomorrow. Do you remember it? याद है ना आपको कल आपका मॉक टेस्ट है इंग्लिश का राइट एंड व्हाट इज द सिलेबस which chapter you are supposed to learn? You are supposed to learn lesson number 5, that is stone soup from your literature book, right? So मुझे तो श्योर है कि अब तक आपने काफ़ी कुछ लर्न कर लिया होगा. थोड़ा बहुत अगर कुछ रिवाइज करना रह गया है then definitely you have today's time. This is the last in fact day left for you. So you need to prepare yourself well, and for that today we are going to do a thorough revision of this chapter so that आप अच्छे से कल के एग्जाम के लिए कल के टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाएं. So first we will do the revision, and then after that I am going to tell you some very important things, some guidelines I am going to tell you which will help you to give your mock test and to understand that how you are supposed to give. Okay, so let's start our revision part. Why to waste time, right? So here now I'm going to share my screen. Here in the screen you can see all the book and notebook exercises that we are going to revise today. Okay, so we are, as you all know, that we are beginning with the lesson number 5, stone soup, right? So in this chapter I'm not going to again tell you the entire story, but I'm just going to tell you few important things, events that occurred in this story. So who was the one who came to the village one day? A young man. Was the man old or young? The man was old or young? It was a young man, not an old man. Na, you can see here. देखो क्या ये old man दिखता है? No ना, it is a young man. तो अगर question मान लो आ जाए, the dash man came to the village, तो आपको क्या लिखना होगा? Young या old? Young, of course, right? So he was very hungry, and then when he asked food to the villagers, what did they say? They said, go away. What did they say? They said, go away. Did they say go away or play with us? What did they say? They said, go away, right? So anyway, the young man said, no problem. Just give me a boiling this thing pot, water and a pot, and I just need arrange a fire so that I can prepare a soup for all of you, right? So the villagers thought that why not, we will arrange a pot for him with a boiling water. So then they arranged everything, and then what happened? This young man, he took out something from his bag. What did he take out? He took clothes from his bag. Okay, did he take utensils from his bag? No, na? So he took a shiny stone from his bag. What did he take? He took a shiny stone from his bag, right? And then he dropped it in that boiling water. So then everybody one by one added few vegetables to that stone soup, right? What did they add? Can you tell me? They add cabbage, they add potatoes, they add beans, and at the last they added salt and pepper. So after when the soup was boiled properly, it was prepared, then everybody, all the villagers, they shared the soup, right? And everybody enjoyed the soup. Can you tell me how was the taste of the soup? Was it tasteless or it was tasty? It was tasty, right? It wasn't tasteless. ये तो बहुत tasty बना था ना?
right? So this is all about the story that we have learned and what all we did in the book exercise. So let's just revise it. So what did the villagers add to the soup? Can you tell me? Cabbage? Yes, they added cabbage. Beans? Yes, they added beans. Did they add onions? No, they did not add onions. Potatoes? Yes, they added potatoes, right? Did they add carrots to it? No, they did not add carrots. Okay, the last one, salt and pepper. Yes, they added salt and pepper to the soup, right? Now the next exercise. Here the question answers we have not done in the book. We have done it in our notebook, right? So now the next page, here in this what we have learned in this book exercise, that look at the picture, then read the sentence and circle the pronouns. So what I told you, like the words that come instead of the nouns, instead of the names are called pronouns. जो word किसी के नाम की जगह आता है उसे हम pronoun कहते हैं, right? जैसे boy, राम के लिए हम क्या बोलेंगे? Instead of Ram we can say he, right? Instead of Sita we can say she, right? So for boy we use he, for girl we use she, for animals and for things we use it, right? For many people, if there are more than one people and I am also included in it, then we say we, right? If we have to tell that somebody else, the people, I am not there, I am not included in that, but somebody else, they are doing something, so we will say they. What we are going to say? They. And if I am talking to you, so I will say you. Instead of telling your name, I will say you, right? So these are the pronoun words, right? So let us now underline or circle the pronoun words. So this number one, this is my mother. She is a pilot. So instead of mother, which word did we use? She, my and she. So instead of my name, I said my, and instead of my mother's name, I said she, right? So these are pronoun words. Number two, this is Samir. He is my brother. So instead of Samir, in the second sentence, we have used the word he. So he is a pronoun word, right? These are kittens. They are cute. So kittens. Instead of kittens, in the second line we have used they for kittens, right? Now, number 4. That is the parrot. It eats guavas. So, instead of parrot word, we are using which word? It. For parrot, we are using it. So, it is a pronoun word. This is my uncle. You will like him, right? So I am talking to you. I'm not telling your name. So instead of telling your name, I am telling you what? You, right? I'm denoting you with you. So you is a pronoun word, right? Number 6. These are my friends. We play together. So instead of friends, which word I am using? Which word? That is we. We. So we is a pronoun word, and instead of my name I am using my. So my is also a pronoun word, right? Now next, what else we have learned in this book exercise? That if about the sentence, right? So we have learned that how to make a proper and accurate sentence. So I told you, if you can remember, there should be 3 things in a sentence. Then only it can be accurate or a perfect sentence, right? So a sentence should always begin with a capital letter. Sentence हमेशा capital letter से शुरू होना चाहिए. A sentence should end with a full stop. A sentence should always end with a full stop or question mark, right? And at the end, a sentence should be a meaningful sentence, right? So, like if I say, I like. So, I like is a sentence. I like. मैं पसंद करती हूँ. मैं पसंद करती हूँ क्या?
I'm not saying, so it is not a complete sentence, right? So if I say I like bananas or I like apples, so it makes a complete sense, and then we can say that it is a correct sentence, right? So here you can see my mother baked cupcakes. So here what is wrong in this sentence? See, the first letter will always begin with capital, and at the end there should be a full stop, right? So let's write the correct one. My mother baked cupcakes. So here my's M will be capital, and at the end we have to put full stop, and this sentence makes meaning. So it's an correct sentence. It's a correct sentence. Next one, number 2. I helped her. Here you can see the letter I begins with a small letter, which is not correct, right? So what we are supposed to do? I has to be in capital letters. So I helped her. So this is the correct one, and we have to put a full stop, right? Next one. Aparna came to my house. So Aparna's A will be capital, because anyway Aparna is a special name. So it should be in capital letter, right? Now this one. She is my friend from Pune. So here the first letter she will be in capital. But apart from S, some other word has also a special name. Which word it is? Pune, because Pune is the name of a city. Pune is the name of a city. It's a special name. So Pune's P will also be in capital, right? So the correct answer is she's S will be capital and Pune's P will be capital. She is my friend from Pune. Full stop, right? Now here, very important, right? Well, here we saw that there are some utensils like saucepan, frying pan, cup, plate and bowl. So Mohan has to use some utensils to for different purpose, right? So you have to now tell me that for which purpose he is going to use which utensil. Like he boils milk in a. So to boil milk, we will use which of these utensil? Saucepan, yes. So we have to use a saucepan to boil the milk. Number 2, he fries eggs in a. So what he's going to use to fry the egg? Frying pan. This one, frying pan, right? Number 3, he drinks tea in a. He will drink tea in a cup, right? He will drink tea in a cup. Number 4, he serves soup in a. He will serve soup in a plate. No, not so, no. So it should be bowl, right? Next one, he eats food from a plate, right? So now you are clear. So if I give a question that Mohan wants to boil milk in which utensil, and if I say saucepan and frying pan, so will you be able to recognize that which one he will use? So it should be saucepan, not frying pan, right? Okay, good. Now, next one. So here the villagers are again going to make a soup and they are going to add some more vegetables. Can you just tell me the spelling of these vegetables? So the first one is C-O-R-N, corn. P-E-A-S, peas. C-A-R-R-O-T, carrot. P-E-P-P-E-R, pepper. And S-P-I-N-A-C-H, spinach. S-A-L-T, salt. Right? Now, next one. See here, what shall I eat? And here the boy is saying, I am hungry. What shall I eat? I am hungry. It is, what is the time in the clock? It is 4 o'clock, right? So I asked my mother, what shall I eat? So what did my mother reply? You can have a banana, right? And then you can also have some grapes. You can have a slice of bread with butter. So I said, maybe I shall have all of them, right?
So these were the book exercises. You have to learn them properly. Okay. Now let's revise the notebook exercises. Okay. So these are the new words. Okay. So the first word is young, and the spelling of young is Y-O-U-N-G, young. Second is village, V-I-L-L-A-G-E, village, V-I-L-L-A-G-E, village. H-U-N-G-R-Y, hungry, H-U-N-G-R-Y, hungry. F-O-O-D, food, F-O-O-D, food. S-T-O-N-E, stone, S-T-O-N-E, stone. S-O-U-P, soup, S-O-U-P, soup. S-H-I-N-Y, shiny, S-H-I-N-Y, shiny. T-A-S-T-Y, tasty, right? So these are the words, these are the spellings. You have to learn the spellings of these words, okay? Now let's do the revision of fill in the blanks, right? See, here the question can come in any form. You have to learn the statements, the sentences properly, okay? Like if the question comes, a dash man came to a village. So what you are going to write? Young. And what is the spelling of young? Y-O-U-N-G, young. The young man made a dash soup for everyone. So which soup did he make? Did he make chicken soup? Tomato soup? No, he made stone soup, right? Next, number 3. The villagers added dash to the soup. What did they add to the soup? Vegetables or egg or chicken. What did they add? They add vegetables to the soup, right? And the spelling of vegetables is V-E-G-E, veggie, T-A-B-L-E-S, tables, right? Vegetables. Number 4, the dash was very tasty. So what was very tasty? What was very tasty? The food was tasty? No, the food wasn't prepared there. So what was tasty? Soup was tasty. And what was the spelling of soup? S-O-U-P, soup, right? Now, let's revise the next exercise, that is true false. So, I have told you the meaning of true is correct and the meaning of false is incorrect, wrong, right? So, now tell me, the young man was hungry. So, is it a correct sentence? Was the young man hungry? Yes, he was hungry. So, we are going to write down true, T, right? T-R-U-E, true. The soup was tasteless. Was the soup tasteless? No, it was very tasty. So the statement is false. So we are going to write down false, and the spelling of false is F-A-L-S-E, false. Number 3, everyone shared the soup in the village. So what did they share? Soup. So the statement is absolutely correct, and we are going to write down true, T-R-U-E, true, right? Now next one, question answer, right? So what did the villagers say to the young man? The villagers said to the young man to go away. What did the villagers said to the young man? The villagers said to the young man, go away. What did he take out of his bag? He took out a shiny stone from his bag. What did the young man take out from his bag? The young man took a shiny stone from his bag. What was the soup really made of? The soup was made of water, cabbage, potatoes, beans, salt and pepper. Right? Done? Great. Now, let's do the revision of make sentence. Right? So, make a sentence with the word soup. I like tomato soup. Right? Number 2, water. We should save water. It's not compulsory that you have to only write this sentence. Any sentence you can write using these words, but just make sure the sentence should be a correct one, an appropriate sentence, right? So, this is all about the revision of your mock test.
Hope that now you have understood it. Now whatever, if you feel that something is still left, you need to prepare it. So please don't waste your time. Revise it thoroughly. Okay. Hope that nothing is now difficult to you. It's very easy, right? अब बेटा मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस बताने वाली हूँ. इसको मैं जानबूझकर हिंदी में बता रही हूँ सो दैट आपको और आपके साथ में कोई जो भी एल्डर कल आपके टेस्ट के समय रहेगा वो भी समझ ले. ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए, ध्यान से मैं क्या बोल रही हूँ उसको समझिए, जिससे कि कल आपको टेस्ट देने में कोई भी परेशानी ना आए. ठीक है, सो बेटा लेट मी जस्ट स्टार्ट. आपको पहले रिविजन तो अच्छे से कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है, तैयार हो जाना है. एंड 11 o'clock पर आपका एग्ज़ाम टेस्ट स्टार्ट होगा, तो आपको 11:15 बजे 10:45 तक एकदम रेडी हो जाना है. अपना मोबाइल या कंप्यूटर जिससे भी आप टेस्ट देने वाले हैं उसको रखकर एकदम रेडी रहेंगे. ठीक है, अब आपको 10:55 पॉसिबली 10:55 के अराउंड आपको एक लिंक आएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर. जैसे रोज क्लास अटेंड करने के लिए आपको लिंक आती है ना, द सेम वे यू आर गोइंग टू गेट लिंक. ठीक है, उस लिंक पर आप जब क्लिक करेंगे, ध्यान से सुनो बाबू. ठीक है, बहुत घबराना नहीं, जल्दबाजी नहीं करना. अगर जल्दबाजी जिसने किया उसका सब गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है, फिर मैम भी कुछ नहीं कर पाएंगी. ठीक, तो ध्यान से मेरी बात को सुनो और उस तरह से करना. ठीक है, लिंक जब आएगा उस पर क्लिक करेंगे. ठीक है, तो जब आप क्लिक करेंगे आपके सामने क्या आएगा, एक क्वेश्चन पेपर, एक क्वेश्चनर आएगा. ठीक है, उस क्वेश्चन पेपर को लैंडस्केप मोड पर देखेंगे. कैसे देखेंगे, लैंडस्केप मोड पे, पोर्ट्रेट मोड पे नहीं देखना. ठीक है, टर्न करके स्ट्रेट ऐसा देखेंगे, हाँ, जिससे कि आपको अच्छे से दिखेगा. ऐसे पोर्ट्रेट मोड पर देखेंगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा. लैंडस्केप मोड पर उसको देखेंगे. ओके, नाउ अब उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी मैं आपको बता दूँ. ठीक है, फर्स्ट थिंग इज बाबू क्या रहेगा, आप उसमें देखेंगे कि टेस्ट दिया रहेगा, क्लास दिया रहेगा, सब्जेक्ट दिया रहेगा. सबसे पहली चीज़ जो उसमें आपको फिल करने के लिए रहेगी दैट इज लिखा होगा टाइप योर नेम एज पर द स्कूल रिकॉर्ड. क्या लिखा रहेगा, टाइप योर नेम. तो उसमें आपको अपना नाम लिखना है. अपना नाम मतलब घर वाला नाम नहीं लिख देना है, सोनू, बाबू, प्यारू, नानू, ये सब नहीं लिखना है. घर वाला नाम नहीं लिखना है. जो स्कूल में मैम आपको जिस नाम से बुलाती हैं, प्रॉपर आपका नेम और आपका सरनेम प्रॉपर आपको टाइप करके लिखना है. ठीक है, प्रॉपरली लिखना है. आई कार्ड में आपका नेम लिखा हुआ है ना, सो आई कार्ड से चेक करके आप लिख सकते हैं, है ना. सो आई कार्ड से भी देखकर आप प्रॉपर अपना नेम लिखेंगे. ठीक है, उसके बाद सेकंड नीचे आप आएंगे तो सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे लिखा है टाइप योर मदर्स नेम. क्या लिखा रहेगा, टाइप योर मदर्स नेम. ठीक है, तो उसमें अपनी मम्मा का नाम लिखना है. किसका नाम लिखना है, अपनी मम्मा का. मम्मा का नाम पता है ना सबको, स्पेलिंग आती है, अगर नहीं आती है तो आज सीख लीजिए. ठीक है, मम्मा का नेम लिखना है. उसके बाद ये दोनों चीज़ें जब आप फिल कर लेंगे, अपना नेम और अपना मम्मा का नेम, तो उसके बाद आप देखेंगे 1 से लेके नंबर 10 तक ऐसे 10 क्वेश्चंस दिए रहेंगे. कितने क्वेश्चंस होंगे, 10 क्वेश्चंस दिए रहेंगे. ठीक है, हर क्वेश्चन के आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे. ठीक है, क्या मिलेंगे, ऑप्शंस मिलेंगे, और आपको सही क्वेश्चन को पढ़कर, ध्यान से पढ़कर सही ऑप्शन को चूज करना है. ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक अगर एग्जाम्पल दूँ, लाइक द विलेजर एडेड डैश टू द सूप. तो ऑप्शन में दिया है कैबेज और दूसरा ऑप्शन में दिया है कैरेट. राइट, तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, कैबेज डाला था सूप में या कैरेट डाला था, कैबेज डाला था ना. तो आपको अगर लग रहा है कि आंसर कैबेज है तो आपको क्या करना है, अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो फिंगर को वहाँ पर लेकर जाना है जहाँ कैबेज लिखा रहेगा, उसके सामने देखेंगे एक स्मॉल छोटा सा सर्कल रहेगा. क्या रहेगा, छोटा सा एक सर्कल बना हुआ रहेगा. तो उस सर्कल पर जब आप ऐसे टैप करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा. क्या करेंगे,
ऐसे टैप करेंगे। टैप करते हैं ना, मोबाइल पर लिंक टैप करते हैं, तो ऐसे जब टैप करेंगे तो वो आंसर आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हैं तो माउस को ले जाकर उस पर क्लिक करेंगे तो वो आंसर सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ऐसे 10 क्वेश्चन के आंसर्स आपको एक एक करके पढ़ के सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको देने हैं। कोई भी आंसर छोड़ना नहीं, अगर छोड़ा तो आपका पेपर सबमिट नहीं होगा। ठीक है, सारे 10 क्वेश्चंस का आंसर जब आप सेलेक्ट करके सही आंसर दे दिया है, ठीक है, जो भी आपको सही लग रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट करके समझ कर, ऐसा होगा नहीं बेटा कि आपको नहीं आएगा, आप ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तो ज़रूर आएगा। ठीक है, तो उसको करके लास्ट में देखेंगे नीचे सबमिट का बटन होगा। कौन सा बटन लिखा रहेगा? सबमिट। ठीक है, SUBMIT, सबमिट। तो सबमिट के बटन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, लेकिन एक बात का एकदम ध्यान देना है, ध्यान से सुनो। सबमिट का बटन क्लिक करने से पहले एक बार पूरा चेक कर लेना। ठीक है, शुरू से, कि कहीं कोई ऑप्शन छूट तो नहीं गया, कहीं मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ तो नहीं दिया, कहीं मैंने अपने नेम की स्पेलिंग या अपनी मम्मा की स्पेलिंग गलत तो नहीं लिख दी। पूरा अच्छे से पूरा चेक कर लेंगे सबमिट करने से पहले। और जब आप कर लेंगे कंप्लीट करके, तब जब आप सबमिट करेंगे तो वो तुरंत इमीडिएट आपका रिजल्ट, आपका जो क्वेश्चन पेपर है, आंसर शीट है, तुरंत मेरे पास आ जाएगा। मुझे यहाँ पर मेरे कंप्यूटर पे तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि किसने मुझे सबमिट किया है। अगर मान लो नैमिश ने मुझे क्वेश्चन पेपर सबमिट किया तो तुरंत मेरे पास नैमिश का नेम लिख कर आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो विवान ने सबमिट किया है ना, तो विवान, आपका नेम तुरंत लिख कर आ जाएगा, दैट विवान हैज सबमिटेड द पेपर, राइट। सो अगर मान लो आराध्या ने पेपर सबमिट किया तो आराध्या बेटा जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका नेम लिख कर आ जाएगा मेरे पास। जब आप सबमिट जैसे ही करेंगे तो तुरंत मेरे पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और मैं आपका आंसर शीट देख सकूंगी कि आपने क्या, कितना सही किया, कितना रॉन्ग किया। ठीक है, समझ में आया? तो आपको एक ही चांस मिलेगा आंसर को करने के लिए, समझ में आया? दूसरी बार रेस्पॉन्स नहीं दे सकेंगे आप, इसीलिए ध्यान से करना, बिकॉज ओनली 1 रिस्पॉन्स इज एक्सेप्टेड। ठीक है, एक ही बार आप कर सकते हैं, उसके बाद अगर बोलेंगे ऐसा हो गया मैम, वैसा नहीं, गलत कर दिया, तो देन यू कांट गेट अ चांस। ठीक है, आंसर शीट, क्वेश्चन पेपर आपको एक ही बार मिलेगा और ध्यान से करना है। ठीक, समझ में आया? एक टाइम लिमिट आपको दिया जाएगा, वो आपको अभी कुछ देर में गाइडलाइंस मिलेंगी, तो उसमें सारा लिखा रहेगा कि कितने आपको टाइम मिलेगा, कितनी देर के अंदर आपको सबमिट करना है, उतनी टाइम के अंदर ही आपको सबमिट करना है। उसके बाद अगर आप सबमिट करेंगे तो अगर यहाँ से बंद हो जाएगा सबमिशन का, अगर ये बंद हो जाएगा, ठीक है, तो फिर आप सबमिट अपना क्वेश्चन पेपर नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर बेटा कि आप अपना क्वेश्चन पेपर को आंसर करके टाइम पर सबमिट करें, टाइम का भी ध्यान देंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, श्योर। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, उतना एनफ टाइम दिया जाएगा कि जिसमें आप आराम से पढ़कर आंसर कर सकते हैं। ठीक है, और टाइम का ध्यान देना, ये नहीं कि एकदम आराम से 1 घंटे लेकर, बिल्कुल नहीं, आपको उतना लिमिटेड 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए लिमिटेड टाइम मिलेगा, वो आपका टाइम स्लॉट लिखा होगा कि कितने टाइम के लिए आपके को ये वैलिड है, और उसके बाद अगर आप सबमिट करने की कोशिश करेंगे बेटा तो वो बाउंस बैक हो जाएगा, वो सबमिशन आपका नहीं होगा, नहीं एक्सेप्ट मैं करूँगी। ठीक है, सो ध्यान से अच्छे से करेंगे। जैसे ही आप सबमिट कर देते हैं मैं चेक करूँगी और आपका रिजल्ट आपको फिर शाम तक, आपको 5 o'clock के दौरान आपको रिजल्ट आएगा। ठीक है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपका नेम के साथ में आपको कितना आपने मार्क्स आपको मिला है, you will get the result. ठीक है, understood everyone? Hope that now there is no problem. You have understood it very well कि कैसे करना है आपको, और अभी आपको शायद हो सकता है शाम तक में कुछ गाइडलाइंस भी आ जाए। ठीक, तो my best wishes are there with you.
अच्छे से करना, अच्छे से प्रिपेयर करो और कल टेस्ट अच्छे से देना, ठीक है। गॉड को प्रे करके अच्छे से टाइम पर रेडी होकर बैठ जाना और एकदम कॉन्सेंट्रेट करके अच्छे से टेस्ट को देना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक चिल्ड्रन, prepare yourself well. So that's it for today. We are going to meet tomorrow during the test, ठीक है। हम देख तो नहीं सकेंगे एक दूसरे को, लेकिन जब आप मुझे सबमिट करेंगे पेपर, तब तो मुझे पता चलता ही रहेगा ना कि कौन कौन पेपर दे रहा है, कब कौन सबमिट कर रहा है ना। सो बाय फॉर नाउ एंड बेस्ट ऑफ लक, बाय।